इसमें आ जाओ। So DCM Shriram ka, I thought the demerger is not yet done. I was interested in their EV and that armored vehicle, this thing. But last Sir, जो मैंने आपको their armored vehicle business is not very big and it is a very difficult business which they are just trying to cater to, and they are not very confident in the armored vehicle. It looks ठीक है. very easy. It looks very easy for armored vehicles. Basically, they are into sugar, they are into chemicals, and they are into rayon. Okay, and also they were into EVs. So is this the one which was into EVs? No. That's There the is other one. there is a confusion. There are two DCM Shriram Limited. One is the DCM हाँ जी, Shriram Industries and one is DCM Shriram Limited. These are two different brothers. हाँ So in जी. the DCM Shriram Industries, the demerger is happening, and the DCM Shriram Limited, nothing is happening. Okay, the EV is in the other one you are saying. Yeah, the EV is in the other one. उसमें कुछ नहीं हो रहा है. So there is a confusion amongst the investors. So when I visited this company, there was confusion was in my head also, which अच्छा got cleared over there. ठीक है. अच्छा ये मुझे लगता है विजय जी तो आ गए. मैं एक बार खाली एक बार सुनील जी को बुला लूं फिर सुनील जी को बुला लो because उनका एक question था. So I thought it's a Sunday. It's a Sunday, so I can address your questions. right away. Friends, we have two new joinees. One is Suchi Agarwal ma'am and one is Mangalore Deepak ji. So you are two new friends in the group. आओ ना इसमें आपका क्वेश्चन भी था ना तो आप क्वेश्चन भी आंसर हो जाएगा. आ जाओ ना इसमें बैच 4 में. अच्छा सुनील जी भी आ गए आई थिंक. Acha, before proceeding with the questions, I would request Suchi ma'am, please can you introduce yourself to the group so everyone can know. If you can unmute and talk. Good afternoon, everybody. I'm Shuchi Agrawal. I've been investing for the last 2.5 years. Serious investing since the last 2 years. Okay. Markets are a very big place to learn, and I'm just trying to gather as much information I can. Guys, anyone of the old members wants to give her ma'am some gist of what trades we do or what technicals we look at, please go ahead. Just give to so Baki ka others they can fill in. Hello madam, I think I know you from Techno Funda. You're doing a lot of good things. You were doing noticeable things over there. Over here we don't follow price action. It is just we do technical. We do fundamentals. We see how the companies. We see what is it. We see what is the market cap. We see where it can go to. What are the plus and what are the minus. It's absolute. Everything is fundamentals over here. That's what we do. And of course, we do the reading of R30s. That is all the new notifications that are coming and try to figure out what is happening with the company. Yeah. I think that's a good thing to start with. Others can fill in. Anyone of you wants to give the new members some gist of the group, what we are doing? Madam, we are trying to learn the business actually. What the business actually fundamentals is come later. So learning the business, what is the main business, how they operate, how the market behave according to the situation, according to the change decision in the business over a longer terms. According to me. Okay, Sunil sir, what is your question? Sir also shares some good reading, some books which you should be reading, and he also gives the excerpts which you should be focusing on. Yeah, she would have access to all this, I guess. Yeah, I added ma'am to all the groups. Yeah, Sunil sir, what is your question? What is your question, Sunil sir? सर कौन सा माय क्वेश्चन रिलेटेड टू जो ग्रुप में डाला है उसका बात कर रहे हैं आप? Yes. Ma'am, that was regarding that Kesoram demerger. Actually, I had a question on that. Because sir, Kesoram, what is happening is Kesoram is under losses.
So the company is not doing very well for itself. So what they are doing is they are going to sell their Birla Shakti Cement brand, and Ultratech is going to buy this. The capacity of this plant is 10.75 metric tons per annum, which has a capacity of clinker capacity of 8.5 metric ton and a 2.25 metric ton of grinding capacity, which is excess. So Kesoram will be selling this plant to Ultratech. Now Ultratech is the largest producer of cement in the country. So you have an arbitrage over here. 52 shares for one share. If you have 52 shares of Kesoram, you will be getting one share of Ultratech. So the price of 52 shares of Kesoram is around 8,996 rupees. The price of one share of Ultratech will be 10,100 something. So there is a 12% arbitrage over here. That is number one. Number two, what will happen if you buy Kesoram shares after this demerger has been done? You get Ultratech shares. So you get this 12% on day one. Secondly, what will happen? A company which is in under debt and not able to run the plant because of debt issues, because of several issues, the EBITDA per ton is drastically low. Because in a cyclical businesses, we know we have to look at the EBITDA per ton, which is drastically low over here. And EBITDA per ton for Ultratech, the good managed company, the bigger company, is drastically high. So what you will see this plant EBITDA per ton will be going up in the next 6 months, 1 year, 2 year, and valuations also for this plant will rise. So Ultratech will be giving one share for every 52 shares of Kesoram. Their share capital will be going up, and their valuations will also be going up because they will be getting a higher EBITDA per ton. I have shared that article in the group. You can read that article for the details. Remaining with the business, which is with Kesoram, the Signet business, they are into a rayon business, they are into transparent pulp business, and they are into transparent paper business, and they are into chemicals business. So you will be getting a Signet now. Kesoram will be left with just an holding company of Signet, 100% holding company. So you need to go and look at Signet. See, all the Signet investments or the market cap will not be allocated to Kesoram because holding company always works on a discount. So it makes sense to go for this demerger before the demerger has been done. You get the arbitrage also, and you get the residual business also. If you want to participate, That's exactly. Actually, I read that M&A screenshot details what you read. But yes. what my doubt was, so the arbitrage is actually more than 12% I with know, sir. I know it plus is the more rest than of the business, whatever sir, you sell off for the Signet one. I know it is more than 12% because you will be having the residual Signet business also. अभी मैं सब कुछ अगर आपको ग्रुप में बोल दूंगा तो people will bounce and buy. No, as you know, sir, I will never give any recommendation to buy or sell. It is you have to learn to do it on a basis. No, I understood that part because the one thing which was not clear to me was whether Kesoram remains or you just get Kesoram will remain with you. Kesoram Signet 100% just like a holding company. with you. That will remain with you. Okay. So ideally your arbitrage is more than 12%. So you will be making around 20-30% in no time. But if you keep that Ultratech share which you get, you'll be having access to cement capacity which is throughout the country. Yeah, I got that. And that I got, sir. Because nothing was mentioned too much about that Signet or the residual business. Sir, there are some limitations, but I can say in a video or in a recording which I'll be making public. So this was a short recording of 10 minutes which I made public on the YouTube. So that is why I did not mention much about it. No problem, sir. I was just wondering. Sir, give me 1 second. I've got a call. Give me 1 second, please. Hello.
Yes, sir. Sorry, I got a call. Hello. Am I audible? One more thing. Yes, sir, Signet you are. Yeah, please. Signet is not listed or what? Sir, Signet is not listed, but you will be having the Kesoram share, residual share. Yeah, So, yeah, yeah, yeah. So then automatically the only way to value for the market is to give Kesoram only because Signet is not tradable only. Kesoram will be, what will be happening is Kesoram will be holding only the Signet investment, nothing more Yeah, than that. that's why I said so. Then probably the only way for the market is to give any value for Signet is to give नहीं Kesoram. नहीं नहीं ऐसा नहीं होता सर ऐसा नहीं होता I'll just give you one hint of this. See, can you look at this? See, they were into losses, so they sold off their tire business very early on. So the rayon, the TP, the transparent paper chemicals is a business which is having just 244 crores of turnover in the last 6 months. Sorry, in last year. This is last year. So what they're doing is they're going to sell this business. Now this Signet is a 100% subsidiary, right? But if you see this Signet, see this the rayon and all these businesses are making losses. So why I say you should buy this before the demerger? Suppose do you have a calculator with you? Just multiply 52 by 173. 8996 And this 9000 sorry. is also 9000. 8996 9000. This is 10,100. Yes sir. Do you have a difference of 1100 bucks? Yes sir. Sir, आपके पीछे आवाज बहुत आ रही है. Then what you can do is you can hold on to this stock because your EBITDA per ton and your valuations per ton will go higher because once this 10.75 metric ton plant comes into Ultratech basket, definitely the valuations will increase. Now, what will be left over here? You are doing a turnover of 250 crores, but you are making losses. Okay? And that is why your business is into losses because this business is highly mismanaged. So a 250 crore business, even if you are making losses, market is not going to give you zero market cap. Next, what is going to happen over here? This 377 crores, sorry, 337 crores of preferential capital, which they have allocated to Signet, which they allocated to Ultratech is going to get cancelled. When this is going to get cancelled, your reserves and your equity is going to be reduced in that proportion. So a capital reduction pattern is also happening over here. Yes, definitely you have got lots of debt. With the money you receive by selling the plant, you will be having shares of Ultratech. Now the promoters will also be having shares of Ultratech. What is the promoter holding? 43%. So how many number of shares? 31.1 crore. So what is 43% of 31.1 crore? 13 crores 13 approx. crore shares. 13 crore shares divided by 52. 0.25 25.71. Some mistake. 13 crore divided by 52 shares. 25 lakhs. 25 lakhs. So the management over here would be getting 25 lakh shares of Ultratech. So 25 lakh shares of Ultratech into 10,100 rupees, what makes the amount? $2,500 crores. Okay. What is the debt over here? 2,000 crores. So this debt is going to go. And this company is going to be left with 500 crores. Right? Yes or no? Yes sir. Yes. Correct. Now go and study the business. Once the debt is going to be left with 500 crores, don't you think Ultratech is buying only the business or the debt also once the demerger is done? He's buying the Full debt company. also. He's buying Yes. he's buying the enterprise value.
We are trying to pay off the debt with the promoter money. So the promoter is going to be left with more money than 500 crores. Something that I don't understand. So he's not buying Kesoram. Kesoram तो इधर ही रहेगा. तो then What is Kesoram doing is Kesoram is going to demerge. यहाँ buying selling नहीं हो रही है. Kesoram is going to demerge. See, this is the article over here. I posted the article over here. Here. See what is happening. Kesoram Birla Shakti Cement brand is being demerged. Adding more than cement portfolio is going to go to Ultratech, and the holding of CA in paper and transparent paper and all these three business is going to be left with Kesoram. Ultratech has got a 137.85 metric ton capacity. They are selling around 8.5 tons of clinker capacity, 2.25 of grinding capacity. Right? All businesses have some kind of working capital. All businesses have some kind of debt because it's a cement business. It's a cyclical industry. So that is also there. So Ultratech is issuing one share for the debt also, which is related to the cement portion. For the debtor creditor for the working capital also, which is related to the cement portion. This is going to Ultratech. Basically, only Birla Shakti is being. तो अगर मैं देसी भाषा में बोलूं आपको, बिरला शक्ति के साथ जो भी एसेट्स हैं, जो भी डेट है, वो सारा का सारा अल्ट्राटेक में जाएगा. करेक्ट. एंड द प्रोमोटर विल बी गेटिंग वन शेयर ऑफ अल्ट्राटेक. सो आइडियली और उसके बाद अपनी कंपनी भी रखनी है उसको. उसके बाद उसकी कंपनी भी रह जाएगी. तो ये डेप्ट वैसे ही रिड्यूस हो जाएगा. तो 500 करोड़ तो अगर वो पूरे अपने शेयर बेच के भी निकालता है तो 500 करोड़ एक्स्ट्रा है. उसके बावजूद भी उसके पास बहुत सारा पैसा बचेगा. तो व्हाट यू विल बी सीइंग, you will be seeing this loss making business after the demerger, which is 240 crores of turnover and 35 crores of losses, would be having not a very low market cap because they would be ample of cash, and the promoter cannot take out the ample of cash at his discretion because he is only holding 43% stake in the business. बाकी का 57% stake ये DIS का, FIS का और पब्लिक का भी तो है. Why do you think that होगा ना उसका 51 तो होगा ना. उसका एक्चुअली शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना चाहिए एक्चुअली कितने हैं इसके पास में निकाल सकते कि नहीं. सर आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हेलो. हाँ जी सर, FI is increasing. Can't you see that these guys are increasing their stake? These guys are increasing their stake because the value of the residual business is going to be more. So the demerger pattern which we look at for the indiscriminate selling is going to be there. Probably is not going to be that much. Right? So इसमें indiscriminate selling होने का chance भी कम है because of the cash coming in. That is why तो I'm saying you can buy this before the demerger, enjoy the arbitrage and enjoy the residual valuation of segment and enjoy the money which is going to be coming. Because if you are getting 500 crores or 1000 crores, 43% is with the Mr. Promoter, बाकी का 36% is in the public ना. We the public either he has to give a dividend or either he has to try and say कि Signet में invest करूं या कुछ ऐसा कुछ scheme निकालना पड़ेगा. This is a no-brainer opportunity. We the public are always on a techno fund, are always looking at breakout. See what we the public are doing. We are selling because the company is making losses. किसी को नहीं लेना है because stock price नीचे जा रहा है, chart आपका नीचे जा रहा है. That is why people are shit scared. या तो flat हो गया है यहाँ पर ये आपका stage 3 हो गया है. This is scary for you. But this is a lucrative no-brainer opportunity for us. And promoters have pledged 51% stake of their holding. Right? जितना खराब हो सकता था उतना खराब हो चुका है यहाँ पर. इससे ज्यादा क्या खराब हो चुका है? Promoter pledge is 51. So he will be depledging the shares. Right? Yeah. Suppose he says, I will not give you a dividend. I depledge the shares. So the numbers start becoming some better, some good. See, either you will get a dividend, either you can sell the leftover residual business to gain more value, and you will be having one share of Ultratech where you have an arbitrage. And
What is the capacity over here? Okay, let's look at Ultratech. Do you have a calculator in your hand? सर आप बोलिए ना. हाँ जी, हाँ जी. What is the market cap of Ultratech today? 291,758. What is the capacity of Ultratech today? 137.85 metric ton. 130. हाँ, 137. 38 पकड़ो. ठीक है. What is the total EBITDA over here? This is your EBITDA. Let's take it TTM. Your EBITDA is 12,177. Divide 12,177 by 137. 88.88. 88.80. That means around 8,888 per ton. This is metric ton. Yes, into sir. 1,000. Into 1,000. So it's around 8,888 per ton. मोटा 8,000 रुपए per ton हो गया. 8,500 रुपए per ton का EBITDA हो गया because ये metric ton. Correct. Operating profit 8,000 per metric ton ton. में कर रहा Yes. हूँ ना. Correct. हाँ. So 8,000 रुपए ton हो गया. अब now what is the capacity of this BB over here? The capacity of this BB is 10.75. What is the EBITDA over here? 384 crores. 384 divided by 10.75. 35.72. तो 3,500 रुपए per ton. हाँ जी. So the plant over here, which is getting killed by interest cost and all these things, is going to be under this guy's umbrella, which is getting a market cap of 8,500 per ton. So 10.75 is paying 3,500 per ton, correct? So 10.75 into 8,500, this guy will increase market cap anywhere to the tune of 70 to 80,000 crores just by buying this plant. So ideally, what should happen? What should happen? If I divide 80,000 by 2,91,000, I'm just doing a rough calculation. ठीक है? 27% increase. 27%. Yeah, 27%. 4,000 So से आप this multiply stock price. on. सर एक मिनट सर बता रहा हूँ तो जिसको समझ आ रहा है उसको कंप्लीट करा दो विजय सर. This stock price can be easily be around 12,500 bucks. 13,500. Correct. And understood. मैं तो 12,500 ही बोल रहा हूँ सर on the conservative side. So you are getting the arbitrage on day one, which is your margin of safety. You will not get the price today at 8,900. Plus you are getting a growth of the correction of valuation from EBITDA per ton. And let's take a lower estimate. Now why 13,000? Let's make it 12,500. No? समझ में आ गया सर? Plus before the demerger, you have got the residual business of this, where he will be getting the cash. Either he will be depledging his shares or he will be giving you a dividend. So you can make money for a year also. दोनों साइड पे डीप्लेज करेगा तो भी बेनिफिट है, अगर डिविडेंड देगा तो भी बेनिफिट, कैश Sir, depledge, how can he use this money for depledging? I mean, Why he's not? pledged it. Why not? Pledging is he's taken the personal loan at a personal level, right? By Why pledging not? his share. Why not? कंपनी के नाम पे ना. The promoter, sir. We are not Promoter, the promoter. Public. Why not? No. What I mean to say is, promoters is also a shareholder like us, so he has pledged his share with the bank and taken the loan against it, right? Sir, he's the director. He has the liberty to use our money. We cannot say anything. We are minority. He's the majority. No, but can he use this money which is received from demerger to unpledge his own shares? Yes, सर एक्चुअली कंफ्यूजन क्या है कि वो तो 42% का ही मालिक है, तो बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अलाउ करेंगे. वो अगर 10% का भी मालिक हो, अगर वो डायरेक्टर है, वो प्रमोटर है, तो वो ये खेल खेल सकता है. यू कैन नॉट स्टॉप हिम until unless you have a majority stake. ओके सर, एक्चुअली ये कॉर्पोरेट लॉ क्या है हमको आइडिया नहीं था. आई वाज आल्सो काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड. यस सर. Why not? So see, now you understand why do holding companies use people's money to buy shares in their own company. Now Bajaj Holding is a holding company. Bajaj Holding is holding 50% in Bajaj Finance or Bajaj Auto. वहां से जो भी डिविडेंड आता है, they use the full money to buy more shares. They don't give you much of dividend. 10-20% डिविडेंड देगा, बाकी का सारा पैसा उसमें डाल देगा. Can we do anything about it? No, na. Yeah, we have gone over this earlier also. Yes.
Yeah, we have gone over this. I think Rakesh sir remembers. That's why I'm saying we have gone over this in the past. Everybody remembers, but even I was confused. कैसे 42 के साथ में? But he is a promoter title. So once he is a promoter Sir, title or अगर the category, मान then लो yes, he has an extra bars. I'm Yeah. not a sir, I'm not an insider. I don't know वो क्या करेगा. मान लो 42% का अपने पैसे का वो डिप्लेस कर देता है, बाकी का आपको डिविडेंड दे देता है. So you never know, the story will develop. And all this is not on the charts. नहीं, वो डिविडेंड दे के भी तो डीप्लेज कर सकते हैं. आपने हमको डिविडेंड कर दे देगा, सकता है मतलब ना, सबको थोड़ा डिविडेंड डिविडेंड दे देगा, थोड़ा डिविडेंड देगा, थोड़ा डिप्लेस करेगा, और डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट खत्म होने के बाद आप रेजिडुअल बिजनेस को बेच दो. So you get to earn money three places. Now stock market can be going up, stock market can be going down. क्या फर्क पड़ता है हमारे को? All this will never come on the charts. समझ में आया? सर एक क्वेश्चन है सर. पूछो सर. सर वो मैं गुस्सा मत होइएगा, व्हाई आई एम आस्किंग दिस. ये भगवान, मैं आज से गुस्सा हुआ क्या? नहीं सर, वो तो मेरे पास उसका इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी है स्क्रीनर का, और मैंने गूगल अलर्ट भी लगा के रखा है मर्जर डीमर्जर का. मेरे को ये वाला नहीं आया सर. आई एम एवरी डे आई एम स्कैनिंग फॉर दैट. पर क्या कुछ अलग टूल है सर? नहीं सर, आपके पास एक मजदूर बैठा है ना कोटा में. रिच मजदूर, वेरी अल्ट्रा रिच, अल्ट्रा सोफिस्टिकेटेड मजदूर है सर. नहीं सर, ऑन ए सीरियस नोट, आई एम आल्सो स्कैनिंग. मेरे को नहीं मिला सर. आई एम रियली, मेरे को बहुत सरप्राइज हुआ सैम जी ऐसी बहुत सारी नोटिफिकेशन है ना जो आई नहीं है अभी. इसमें से एक थी किसान की, तो इसके लिए आप मैं नहीं समझता सर इसका आंसर दे पाएंगे कि कहाँ पे सिर्फ कोटा में मिलेगी इसकी. सर R30 इज नॉट योर आंसर. R30 तो आपको सिर्फ एक सोफिस्टिकेटेड डेटा मिल जाता है जिससे आपका समय बचे. देयर आर डेली 4000 अनाउंसमेंट्स कमिंग. कैन यू रीड देम ऑन अ डेली बेसिस? द आंसर इज जस्ट रीडिंग, नथिंग एल्स. Idea information can come from anywhere. Why are we wasting our time on the stupid charts? That's what I don't understand. I don't look at charts. I don't look at price action. That is why I get to all these things. Now here, in case you are making money three places. Calculate your returns would be very much different. Stock markets can go anywhere, no problem. मैंने आपको सिंपली डिकोड करके दिया व्हाट यू कैन डू. Sure. Yeah. I got more for the day. Right? Now what is happening? Chalo, is this clear? Can we move ahead? What I was also thinking is, आपने mentioned in so many words नहीं किया है, but Ultratech also would be a good candidate to re-see because उसका per ton नीचे जाने वाला है. That's not what was mentioned. Ultratech is already 137.85 metric ton. He is just adding a 10-ton capacity. This is going to increase his market cap by 50, 60, 70,000 crores. सब खेल है सर. ये कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का खेल. इसी को तो स्पेशल सिचुएशन इन्वेस्टिंग बोलते हैं. It is difficult. ने वो भी तो देखा. It is difficult. It is confusing. Ultratech भी देखा. Ultratech नहीं लेना चाहिए. Ultratech से जो आपको स्टॉक स्वैप आएगा वो रखना चाहिए. If anybody is interested to do, see, I am not giving you any advice to buy or sell. Bracket sir, mute कर लो, एको आ रहा है. I am not giving you any advice to buy or sell. I am just trying to decode the stuff. बाकी लेना नहीं लेना आपकी मर्जी. Seeing we can re-see it. So those who like large caps and don't want to go in for a smaller one and they only see, though it is worth seeing. That's all I was. Yeah, sure. Can I proceed ahead? सर इसकी अभी तक डेट नहीं आई है ना? इसकी डेट अभी तक नहीं आई है. The record date will come, so you can put your Google alert. अप्रैल का आपने जो शेयर किया है उसमें डेट लिखा है अराउंड 1 अप्रैल के, ऐसा कुछ तो है. पता नहीं सर, वो आप देख लो. इसका डेट अभी आएगा. अभी इसका डेट इज स्टिल सम टाइम अहेड. यू कैन बाय 10 शेयर फॉर ट्रैकिंग. सॉरी आपने बोरोसिल का याद दिलाने के लिए बोला था सर. सर बोरोसिल में क्या है? बोरोसिल में क्या है सर? बोरोसिल में बेसिकली दो डिविजन है. वन इज योर कंज्यूमर वेयर एंड वन इज योर लैब वेयर.
when do you need lab equipment, beakers and testings, and when do you need those glass-based lab equipments? When you are making a new medicine and when you are doing some R&D. अभी जब आप मुझे बताओ, in the last 5 years of your life, when was the riskiest or the deadliest time when lab equipment would have been required? Corona, obviously. Of course, Corona. And governments around the world were investing to make vaccines to save humanity and to save everybody. And we were stranded in our homes. We were not able to go out, and every damn thing was happening. उस टाइम में भी जब इसका लैबवेयर बिजनेस नहीं ग्रो कर पाया, तो आरओसी को क्या खाना बना के उसको मतलब क्या करोगे, टेबल सजाओगे क्या? Their labware business is highly profitable, high return metrics, but there is a lack of growth. So what is the use of those profits? Class pack shares have been demerged. They have been credited to your respective demat accounts. जो लोगों ने लिया था, Borosil stock price has been adjusted after the demerger of the class pack. Class pack has still not started trading. If you ask me personally, if I am invested in this, I would rather sell the class pack shares and buy the Borosil consumer division, because they have done a capex. I've shared you my note also, which was made earlier on in the group. You can read that. What is the market size? What are the opportunities over here? What is the 84 ton TPD capacity they have made in Jaipur? वो सारी की सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं, आप जाके उसको पढ़ सकते हो. It's a good business. I don't deny that, but I'm not very happy with the class pack division. So I सर उसी का नाम चेंज करके साइंटिफिक कर दिया है ना सर? हाँ वही है. अच्छा, नाम में कुछ नहीं रखा सर, धंधा क्या है वो समझना. नाम हम तो चेंज होते रहते हैं. If you change this, then once they get listed, again you will be seeing the indiscriminate selling, the demerger pattern will be working over there. So if it comes to a point where the valuations make appealing sense, when it can be so cheap, that is the time I can change the decision, I can change my decision also. But as of now, looking at the dynamics of the business, looking at the avenues for no growth, I would be a seller in class pack. वैल्यूएशन कंफर्ट मिल जाता है, बात अलग है. सर वही क्वेश्चन पूछना था सर. अलग अलग कंपनीज के अलग अलग रीजंस होंगे वैल्यूएशन कंफर्ट मिलने के, बट इन जनरल कैसे देखेंगे सर? उसका मार्केट कैप जो है, वैल्यूएशन अभी चीप हो गया. अभी तक I have only been able to cover how to identify startups and how to value startups. Then I have been able to cover how do you look at forward earnings, forward multiples. ये अभी 3 या 4 ही वैल्यूएशन के कंसेप्ट पिछले 3 महीने में कवर करे हैं. I've been again and again asking all the group members to submit their work, but we क्या करें, सब लोग इतने आलसी हैं. तो I'm also waiting, जब तक आप सबमिट करोगे फिर आगे बढ़ेंगे. So go to the recording sections and you see the old recordings. How do you identify startups, value startups, come up with the thesis of your report. सिर्फ पढ़ाना और ये सब करना मेरा फोकस नहीं है. आप लोग इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे तो फिर ये चलता रहेगा ना. then you'll be always be dependent all your life. Sorry, but he's just asking you, क्या just give us a gist. in particular case में हमको क्या वैल्यूएशन मेट्रिक होगा that will tell us it is cheap? सर किसकी क्लास पैक की बात कर रहे हैं? हाँ, क्लास पैक की. यस सर. सर क्लास पैक का वैल्यूएशन मेट्रिक होगा कि अगर मैं उसके फॉरवर्ड अर्निंग्स को देख सकूं, क्या बिजनेस सेल्फ सस्टेनेबल है? बिल्कुल सेल्फ सस्टेनेबल है. इट इज अ हाई रिटर्न मैट्रिक्स. कैन आई लुक एट द फॉरवर्ड अर्निंग्स डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट साइज. मार्केट साइज यहाँ पर ज्यादा नहीं है. कितने ऑम्प्यूल्स और कितने उनको लैब इक्विपमेंट चाहिए, और इनसे बड़े लोग भी बैठे हैं. So I don't see this company has the wit to capture the market size. I don't see this company has the wit to grow the earnings. So the forward earnings multiple, even if I give a multiple of say 10, 12, 15, the market cap would be equivalent to that. तो मुझे नहीं लगता कि इस जगह मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनती है. अभी क्या प्राइस पे लिस्ट होता है वो देखने की बात है. मतलब बेसिकली वी आर लुकिंग इनटू फॉरवर्ड पी इफ इट हैपेंस. If it happens, see, I'm not looking at forward P. P is something which the market is determining. I'm looking at a forward exit multiple. Okay, sir. दो तरीके हैं. या तो दूसरे कोई लैब या बिजनेस है उसके साथ आप रिलेटिव वैल्यूएशन कंपेयर करो, इसको क्या मिल रहा है. जैसे हमने अभी अल्ट्राटेक में और केशोराम में कंपेयर किया था कि इसका एबिटा पर टन क्या है, उसका एबिटा पर टन क्या है. दोनों में से एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट पकड़ा है.
because one is a bigger guy, one is a smaller guy. But this guy is a smaller guy. If you can find other businesses where the EBITDA per ton or the multiples are similar or the business is similar, वहां जाके आप compare कर सकते हो. One is that way. Second way is how much the business can grow. Then they say we are doing a capex and we going to grow the business and this is what going to happen. And उन्होंने एक कंपनी में अभी और इन्वेस्ट किया था जहां उन्होंने 15 करोड़ या 20 करोड़ लगा के पूरा उसका कैपिटल ले लिया था. And they say we're going to grow this business also. So what are the forward earnings you can estimate? If you can see the earnings next 2-3 years, give your multiple and see what the valuations are today. If you are finding comfort in that, good enough. If you're not finding comfort in that, wait for the demerger selling to come. Then we can look at that. सर ये जो आपने बोला दूसरे से उसका मल्टीपल कंपेयर करने के लिए, ऐसे एक स्पिनिंग बिजनेस का भी डिमर्जर हुआ था सर, जिंदल स्पिन और आई डोंट रिमेम्बर सर, उसमें ऐसे ही करवाया था सर आपने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग. सर डीसीएफ भी एक तरीका होता है, रिवर्स डीसीएफ भी एक तरीका होता है, पर वो जनरली मैं प्रेफर नहीं करता सर, बिकॉज उसके अंदर assumptions बहुत होते हैं. See, reverse DCF is something you are asking the market what is the current growth rate you are expecting, which is a very good thing, right? Where we are not giving our judgments. Now, DCF is for MBA students where you are projecting forward cash flows, which has lots of errors. So when we move to the next phase to mature businesses and capital returning businesses and declining businesses, there we will see how to do a reverse DCF. तो Yes, आप sir. अभी तक जो सिखाया है सर उसमें आप लोग भी तो कोई इनपुट करो. यू आर 50 पीपल इन द ग्रुप, नॉट इवन 5 रिस्पॉन्ड, सो मैं भी शांति से बैठा हूं. यू रिस्पॉन्ड, यू गेट मी गुड वर्क, आई मूव हेड. Yes, sir. लॉट्स टू कवर. अभी तक तो हार्डली 3 months नथिंग हैज बीन कवर्ड. लॉट्स टू कवर. अब आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं जो आज मैं विजिट करके आया. यस सर, यस सर. So this is a company, I hope you can see my screen. This is the company called DCM Shriram Limited. Market cap 16,000 crores. Sorry, 15,000 crores. 900 भी stock price. Right? Now, इस company के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है. Now, they have a business of chlorovinyl, they have a sugar business, they have a fertilizer business, they have a farm solutions business, they have a seed business, they have a cement business. पता नहीं क्या क्या है इसके पास. Right? Nothing is happening over here. There is another company called DCM Shriram Industries Limited. A much smaller company, 1700 crores market cap. What is actually happening over here is they have 3 businesses. One is sugar, one is industrial fibers and related products, and one is chemicals. So you see the sugar business is the largest business, 1500 crores revenue. But profit is nothing because sugar is a regulated business. इन तीनों कंपनी का डीमर्जर हो रहा है, which details I have given you over here. I think I have given you over. Yes, these are details. Can you see my screen? Yes, sir. So the promoters have some investment firms in their personal capacity. What they are doing is they are going to demerge that investment firms in their personal capacity to Lilly Commercials Private Limited. Now, Lilly Commercials Private Limited is going to be only a holding company, जिसके अंदर वो सारे investments रहने वाले. Then what is going to happen? They are going to demerge their chemicals business into a company called DCM Shriram Chemicals Limited, Fine Chemicals Limited. तो DCM Shriram में से chemical बाहर निकल गया. Then they are going to demerge their rayon business and a business called defense and armed vehicles business, which is they are just trying. अभी इसमें कुछ ज़्यादा success मिला नहीं है. Into a company called DCM Shriram International Limited. और बाकी का जो कंटेनर बिजनेस एंड शुगर बिजनेस है वो DCM Shriram में रह जाएगा. तो 3 कंपनी हो जाएगी. इसके अंदर से लिल्ली भैया बाहर निकल जाएंगे जिसमें उन्हें सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं. इसके अंदर से DCM Shriram फाइन केमिकल अलग हो जाएगा, इंटरनेशनल अलग हो जाएगा और ये DCM Shriram में रह जाएंगे. Now, if you look at the numbers of the business, sugar business having 1500 crores and a 30-40 crores profit, highly cyclical, highly regulated, does not make any sense. So in this case, buying before the demerger does not make sense because I will be getting the sugar business, which I am not very happy to hold. But if I look at the
fiber business having a turnover of 300-400 crores, look at the profitability after COVID. 30 crores profit straight away to 68 crores profit. Look at the profitability of the chemicals business having a 300 crore turnover, now 450 crore turnover, around 45 crores profit. Okay, chemicals are also cyclical. I don't deny that. Look at their return metrics. So ideally, in this three, if you have read that book, क्या नाम था उस बुक का, जोएल की किताब में पढ़ी है, तो this is the bad merit. This is the fair merit, having high return ratios but not good, very great margins. This is the good merit. Now, if I look at the market cap of the company is already 1600 crores, which is small. What will happen if I divide this market cap and ratios of the revenues? This is say 20% and this is 60%. मोटा मोटा मैं कोई फिक्स कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर. So out of 1700 crores, if 60%, if I am assuming to be for the sugar, 1000 crores will be for the sugar. And 350 crores would be for the other two fellows. Do you see any big names over here? LIC was, Abacus is there, IEF is there, Asian Marketing Private Limited is there, and more would be also be there. DIIs, LIC is already there, and Abacus is there. Will it make sense for LIC and Abacus तो चलो नहीं बोलूँगा मैं. Will it make sense for LIC to hold a company of 300-400 crores market cap? नो सर, तो इंडिस्क्रिमिनेट सेलिंग आएगा यहाँ पे, आएगा पोस्ट डीमर्जर. आप लोग मेरे को कितने साल से जानते हो सब लोग? 3 साल से सर, अप्रॉक्स. तो आपको लगता है 3 साल में मैं आपको इतना लॉलीपॉप निकाल के हाथ में दे दूंगा? ये बात तो है. नहीं. आपको लगता है कि मैं आपको इतना लॉलीपॉप निकाल के हाथ में दे दूंगा कि जाओ भैया पैसे लगाओ, पैसे कमा लो, क्या ये हो जाएगा, या घुमाऊंगा नहीं? ऐसा लगता है क्या? मतलब सर अगर म्यूचुअल फंड होते तो मे बी म्यूचुअल फंड्स अगर होंगे जो म्यूचुअल फंड को छोड़ो, स्मॉल कैप में जाएंगे तो ऑब्वियसली दे विल हैव टू, अगर उनका डायरेक्टिव नहीं है तो दे विल सेल ऑफ. एलआईसी बोल नहीं सकते. अरे यार सुनो ही नहीं मेरी बात. म्यूचुअल फंड को मारो गोली. मैं मेरे बारे में पूछ रहा हूँ. आप कुछ लोग 3 साल से जानते हैं, कुछ लोग 2 साल से जानते हैं. आपको लगता है कि सब कुछ इतना प्लेटर पे इतना इजी आ जाएगा? नहीं सर, कहानी में ट्विस्ट क्या है अभी ये बताइए. ये आपके दिमाग का कचरा नहीं होगा? नहीं हो तो हाँ गिर जाएंगे. कहानी में ट्विस्ट क्या है वो तो बताइए सर. क्या बोलते हो सर? अभी कहानी में ट्विस्ट क्या है ये तो बताइए. अभी पता नहीं सर, दिल्ली से केक आना था, पता नहीं कब तक इंतजार है, वो तो आया नहीं. वो अभी है भी नहीं, वो आपका बाद में आएगा वो. अरे सर मैडम है, सब सुना जा रहा है, सब सुना जा रहा है. आप दिल्ली नहीं आए, हमने तो केक रेडी किया हुआ था. लो आपने बोला है नहीं, आगी ना आवाज, आगी ना. तो सर इसमें क्या है, अगर आप डीमर्जर के बाद लेने की बातें कर रहे हो तो चलो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप खुद उसको सर्च करना, मेरे पे मत उस पर डिपेंड हो. ये कुछ नाम आपको यहाँ दिख रहे हैं. इसमें एक नाम आ रहा है HB पोर्टफोलियो लिमिटेड. कहीं ऐसा तो नहीं ये HB वाला प्रमोटर का ही प्रॉक्सी हो? See, we are investors. Investors have to be investigators. Nothing is very easy on face value. Stock markets are not easy, they are simple. कहीं ऐसा तो नहीं वो HB वाला इसका ही कोई प्रॉक्सी हो? अगर ये प्रॉक्सी है जो आपको पब्लिक मीडिया में नाम दिख रहा है, इसका मतलब और भी होंगे, और अगर और होंगे तो माय डियर फ्रेंड, फ्लोट के बारे में क्या ख्याल है? बचेगा ही नहीं यार. वो वाला है नहीं ग्रिड. मैंने सबसे पहले वही देखा था जब आपसे मैं बात कर रहा था. उसके लेटेस्ट वो नहीं है, वो नहीं है. आपके 500 कितने हैं वो था नहीं लेटेस्ट ईयर में.
अच्छा नहीं, इसका नहीं हूँ मैं, उसका देख रहा था। सॉरी सॉरी, मैं इसका भी देखता हूँ। सॉरी सॉरी, मैं मेरी गलती है, अपॉलोजीज। क्या बोल रहे हो सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप खुद ही बोल रहे हो, खुद ही सॉरी बोल रहे हो, पॉइंट क्या है? नहीं, अर्लियर कंपनीज का मैं एक्चुअली फ्लोट देखने का कोशिश कर रहा था कि वो प्ले कर सकता है कि नहीं, जब 43% ही बोला था मैं तो, उसका मैंने देखा था, इसका नहीं देखा है मैंने। हाँ नहीं नहीं, वो केसोराम का देखा था, उसमें वो ग्रेड दिखा नहीं था मुझे उसके यार में। सर एक ये एचबी पोर्टफोलियो, इसका तो ये स्ट्राइक ऑफ दिखा रहा है कंपनी स्टेटस, ये नहीं होल्ड कैसे नहीं कर रहा है? नहीं 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 नहीं, मैं एचबी एचबी जोबा पे देख रहा हूँ। एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड, हाँ बिल्कुल, एचबी पोर्टफोलियो आप कुछ लिमिटेड। गलत देख रहे हो, ये कंपनी स्ट्राइक सर ऑफ नहीं है। ललित बसन, अनिल गोयल, कुमार भार्गव। एचबी पोर्टफोलियो H.B. पोर्टफोलियो लिमिटेड, कंपनी स्टेटस स्ट्राइक ऑफ। डॉट नहीं है, और डॉट नहीं उसकी है, डॉट नहीं है। अच्छा एक डॉट में क्या होता है, वो इनिशियल्स आ जाता है, जैसे बड़ा पूरा नेम होता है ना, उसको वो इनिशियल्स कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे जैसे डॉक्टर को डीआर कर देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड का जो एड्रेस है और इसका कोई सब्सिडरी का जो एड्रेस है वो एक ही हो? पता नहीं यार, मेरे को नहीं पता, अब आप लोग सर्च करो। आप सर गाँव का एड्रेस दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? गुड़गांव में दिखा रहा है इसका। मैम दिल्ली में तो आप बैठो, मुझे क्या पता। हम्म। ढूंढो ढूंढो, मैंने तो आपको चीज बता दी, ढूंढो ढूंढो। है तो सर आजू बाजू में ही। अभी हम्म। डीसीएम शुगर का है प्लॉट नंबर 82, इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 32 गुरुग्राम, और उसका है प्लॉट नंबर 31, एचिलॉन इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 32, सेम सेक्टर गुरुग्राम। नाउ यू आर गेटिंग क्लोज। और दिखाऊं? डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, एक मिनट, मैंने गलत तो नहीं खोल लिया, सॉरी मैंने गलत खोल लिया। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज से है ना। हम्म। यहाँ भी सुनील जी बैठे हैं एक। ढूंढो ढूंढो, मिलेगा कुछ। जब मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि डीसीएम श्रीराम में किर्लोस्कर वाले भी घुसे हुए हैं। फिर आप ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा कि जो एचबी वाले का एड्रेस है वो यही है, तो वो जो पब्लिक में माल आ रहा है वो इन्हीं का है। फिर ये जो लिली कमर्शियल आ रही है, लिली कमर्शियल इनके अजय बंसीलाल श्रीराम है, ये लिली कमर्शियल के अंदर इनके सारे इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस हैं। तो यहाँ भी सुनील जी बैठे हैं। ये सुनील वाले जो होते हैं ना, सारे बड़े होशियार लोग होते हैं, है ना सुनील जी? ठीक है। हाँ सर, सुनने में अच्छा है। इसका ये डीसीएम श्रीराम फाइन केमिकल्स है, जिसका डीमर्जर हो रहा है, उसको मैनेज करेंगे विनीत मंगला जी। ये विनीत मंगला 2 बार आ गया यहाँ पर। मनोज कुमार जी के अंदर आ गया है। देखो क्या बिजनेसेस यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पर तो स्पाइस जेट का भी डायरेक्टर है ये बंदा। ठीक है, देखते जाओ कनेक्शंस क्या क्या निकल के आ रहे हैं। सिंबोली शुगर्स आ गया। इंडैग रबर का भी कनेक्शन आ गया। इंडैग रबर इज ऑल्सो योर लिस्टेड कंपनी। ठीक है,
देखते जाओ अभी तो क्या क्या निकल के आता है इसके अंदर। तो इफ यू सी द नेटवर्क, अरे यार एक बार एक सेटिंग खराब हो जाती है फिर कंट्रोल नहीं होता। तो दिस इज व्हाट श्रीराम इज ऑल अबाउट। इंडाइक के आगे चलोगे तो आगे भी कनेक्शंस बहुत सारे निकल जाएंगे आपको। तो व्हाई इज अ शुगर कंपनी अ केमिकल कंपनी हैज टू डू विद रबर? केमिकल के अंदर रबर की जरूरत तो पड़ती है ना, कि नहीं पड़ती? Yeah. Rubber is also a chemical. So maybe India Rubber will hold some stake in the DCM fine chemicals later. Yes, 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 yes. If he will hold some stake in the DCM fine chemical, पृथ्वीराज खन्ना। सर तो डीसीएम फाइन केमिकल्स भी है ना लेफ्ट साइड में, वो मेरे ख्याल से अभी लेकिन बना नहीं है, तो शायद उधर कोई डायरेक्टर नहीं होगा ना। बना हुआ है, देखो now Lilly will be having all the stake of what? Of the promoters having the investment business, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया। ये केशवराम हो गया, ये रहा लिल्ली, ठीक है। लिल्ली हो जाएगा डीमर्ज। जब लिल्ली हो जाएगा डीमर्ज तो यहाँ पर क्या होगा, लिल्ली बन जाएगा पब्लिक, वो यहाँ आ जाएगा, राइट। पर ये उल्टा क्यों कर रहे हैं? मतलब ऑलरेडी डीसीएम श्रीराम तो है ही ऑलरेडी लिस्टेड, तो वो मतलब लिली में लिल्ली क्यों के जाके? अंदर लिल्ली के अंदर क्या है, लिल्ली के अंदर उसका वो है इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। तो डीसीएम जो प्री डीमर्जर है, द नंबर ऑफ शेयर्स आर दिस मच, पोस्ट डीमर्जर नंबर ऑफ शेयर्स आर दिस मच, इनका ये इतना स्टेक होल्डर रहेगा। ऑल दीज कंपनीज डीसीएम, डीएसएफसीएल एंड डीएसआईएल, इसके अंदर रेवन बिजनेस है, इसके अंदर केमिकल बिजनेस है, इसके अंदर शुगर एंड दूसरा बिजनेस है। सो सबके अंदर 50.11% स्टेक जो है वो प्रमोटर का रहने वाला है। बिकॉज see why is he demerging? He is saying that the chemicals business and the rayon business has got a better margins than the sugar business. That is why he is wanting to demerge. So this is what is going to be happening. The chemical business will have an assets of 280 crores, have a liabilities of this, net assets 175, unallocated this much, and so on and so forth of this. So my net assets would be 223 crores. दिख रहा है सर ये नंबर? So just remember 175 and 223. Now come back to screener and now calculate your return metrics. Your PBIT is 66 crores. So 66 crores divided by 223. कितना ROE आया? ROC आया 29.5। और स्क्रीनर आपको कितना दिखा रहा है? है ना फर्क? Now see the these are March numbers, ठीक है। Now see the profitability of chemical business, which is 45 crores. So 45 crores divided by 175 crores. $25.7। Is it good? Is it bad? अच्छा है, 25 तो बहुत बढ़िया है। तो इसमें बिकॉज एसेट का डीमर्ज्ड वैल्यू डाला है, मे बी स्क्रीनर इज यूजिंग द कंप्लीट एसेट वैल्यू ना। Why? Because यहाँ पर बिकॉज unallocated assets getting transferred and unallocated liabilities getting transferred. So these are unallocated. स्क्रीनर क्या करेगा? स्क्रीनर आपको ये प्लस ये माइनस ये करके पूरा का पूरा नेट एसेट देगा।
बिकॉज वहां पर एक एल्गो चल रहा है. दिस इज वाई. नाउ दिस अनएलोकेटेड लायबिलिटीज एसेट्स क्या है? बेसिकली इनको कैश ट्रांसफर हो रहा है. इस कंपनी के पास कैश की कमी नहीं है. इस कंपनी के पास कैश खूब है, लेकिन ये कैश अभी या तो अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो देखने की बात है. दे आर मेकिंग 169 crores of cash. Now, what is making 169 crores of cash? This is on March 2023. What do you think? My profit is 60 crores, but my cash is 123 crores, double than my profits. तो क्या लगता है आपको, मेरे को जो पैसा आ रहा होगा वो शुगर में आ रहा होगा या बाकी दोनों में आ रहा होगा? दोनों में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट्स. Sir, investment cash will never come in your cash flow from operations. I'm talking about cash flow from operations. ये केमिकल और इसमें से आता होगा ना, फाइबर Yes. रिलेटेड. Now look at the growth. What is the growth of the sugar business after COVID? Just try and calculate the CAGR in the last 3-4 years. 1125 करोड़ से 1400 करोड़. कितना CAGR है सर? Approximately 25%. And please do for these two also. इसका 41 है इंडस्ट्रियल का. मैं एवरेज बता रहा हूँ सर. एवरेज ही चाहिए. उसका 34 केमिकल का. Which is growing the fastest? इंडस्ट्रियल फाइबर. Which is your rayon business and the armed vehicle business. And now look at the profit CAGR also. Sugar has degrown because of cyclicality. बाकी दोनों का देख लो. Chemicals is flat. What has grown? Fibers and related products. तो सर गोल्डन गूस कहाँ है? आया समझ में? Which one is the golden goose? रेयन डिफेंस और श्रीराम इंटरनेशनल. ठीक है. अब सब आपने सिर्फ इतना करना. अब सब आपने सिर्फ इतना करना है कि अब जाके इसका फ्लोट चेक करना है. वो भी मैं करके दूं या आप कर लोगे? फ्लोट में देखा था मैंने. So if I can just put it on the group. Give me a sec. देख रहा हूँ. मैंने जनरल में डाला है सर. बोल दो सर. हाँ नहीं it's just coming. I think ये होते हुए ये जाएगा नहीं जाएगा. हाँ आ गया. कितना है सर बोल दो. I'm looking at something else. I'm not looking at the group. अच्छा. So ये 73% आपका इज कॉर्नर्ड. बाकी का 73 मेनली आई थिंक अबाउट 28% है छोटे रिलेटर, छोटे वाले रिटेल. 10,000 के जो नीचे है is about 28%. I believe it would be 28. Sir, what is the stock price today? $190. Yeah. $190 के 10,000 शेयर कितने हो गए सर? 200 के 10,000 about 21 लाख. 20 सर. रिटेल लगाता है 20 लाख रुपए स्टॉक में. नहीं तो आई एम सेइंग मैक्सिमम इट वुड बी अबाउट 28%. उसके ऊपर तो सब बड़े बड़े ही है. और मेजर 1 लाख के ऊपर तो मैक्सिमम इट इज जस्ट 15%. या पॉसिबल. 15.48 यू आर सेइंग. ओके. मैंने 5,000 के नीचे हुआ है आप बोलते हो. उसके ऊपर आप बोलते हो वो भी नहीं होंगे. या पॉसिबल नहीं है? हाँ जी पॉसिबल. श्योर. तो 5,000 के नीचे अगर मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? टोटल शेयर्स इज 1 10 100 1000 1 crore 34 lakh shares. 1 करोड़ हाँ अबाउट.
हाँ जी 1,34,00,000 shares. Now, what is the amount of indiscriminate selling this company can have after the demerger? वो तो FIs बेचेंगे ना, छोटे छोटे तो नहीं बेचेंगे, तो ये वाला इट्स नॉट सो क्यों नहीं 15 बेचेंगे? जब गिरेगा तो डर तो सबको लगता है सर, गला सबका सूखता है। का तो है तो 88%, 12% बाकी रहा सर अबाउट। आई थिंक बीच वाले जो 10,000 से जो 50 है ना वो बेचेंगे, क्योंकि FI उन लोग को बेचना पड़ेगा। बट हाँ, ये 15% में तो काफी लोग बेचेंगे, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। और HB पोर्टफोलियो सर्विसेज जो आपको पब्लिक में दिखा रहा है, एक्चुअली इट इज एन इनसाइडर, HB पोर्टफोलियो लिमिटेड। ठीक है, दिल्ली कमर्शियल इज एन इनसाइडर। ठीक है, तो यहां पर जो HB पोर्टफोलियो दिख रहा है, EB प्रमोटर का ही भाई है। Right? So that is why I wanted to get this to your notice that the float is very less. If you want to get onto this opportunity, decide. If you want to get onto which business, decide. My job was to decode the stuff, which has been done. both opportunities अच्छा है, बट आई थिंक आई लाइक द अर्लियर केसोगाम वाला इज अ रियल नो ब्रेनर। इसमें थोड़ा मेहनत होगा आई थिंक, वो तो एकदम ही प्लेटर में दिया हुआ है। इसमें आपको मिलना भी चाहिए ना सर, डीमर्जर के बाद आप खरीदने जाएंगे तो उसके बाद में क्या पता ये भी जाएगा ऊपर रॉकेट की तरह, सर्किट। मे बी यू आर राइट। सर सिर्फ 22% है, 22% है जो 2 लाख के 15 22 भी नहीं, ओनली 15। 5,000 तक। क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखने की बात है। 15 शेयर होल्डर है सिर्फ जिनके पास 2 लाख से ऊपर है, बस मतलब इंडिविजुअल। बाकी तो सब वो लेके बैठे हैं, LIC के पास है, एबैकस के पास है और HB पोर्टफोलियो, ये तीनों ही है। नहीं बेचता सुनील, नहीं बेचता। ठीक है सर। राइट सर। हाँ जी चलो फिर, ओके। थैंक यू सर। सर एक WTI पे था, मैं कॉल एक्चुअली कल वाला सुन रहा था, तो अगर फ्री हो 2 मिनट के लिए बोलो ना सर। WTI में क्या है, अदर एसेट्स दिखा रहा है 21 करोड़, ट्रेड रिसीवेबल 77, कैश इन एंड 11, अदर एसेट्स 15। समझो हम सिर्फ अदर एसेट्स लेते हैं जिसका 21 करोड़ दिखा रहा है बैलेंस शीट में, अगर 10 लाख की भी एक गाड़ी लेते हैं मतलब तो सिर्फ 210 गाड़ियां उसकी खुद की हुई। और कल कॉल पे कुछ बात कर रहे थे कि 7,000 कार्स है व्हीकल से, तो मतलब बाकी की 6,800 गाड़ियां पूरी लीज पे है। अच्छा, बोरोइंग्स को समझो एसेट्स के साथ वहां पे, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी है और अदर लाइबिलिटीज भी उसकी 57 है, वो जो सब मतलब वो वहां पे छोड़ देते हैं उसको जितना बैलेंस था। इसके हिसाब से तो इसको तो मतलब जनरेट करने को जो IPO का पैसा है वो चलता रहेगा, बट बाकी तो जनरेट करने के लिए तो लीज और इस पे ही सब निकल जाएगा, क्योंकि ड्राइवर्स की निकल जाएगा जब तक इसके पास जोग्राफिकल एक्सपेंशन इतना कर लेगा, जब तक ये कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी तो उसको और रेवेन्यूज आ जाएंगे ना। So the cash flows today are minus, but they will not remain minus going ahead, no? But he can carry on 8 years without any this thing. That's what we discussed. Yes. Yes. And only 784 employees are there, including the director, which are on the payroll. मतलब fixed employees.
बाकी ये सब वेरिएबल एम्प्लॉयज हैं. हाँ So जी. you have to value that business as a startup. It is a startup. What is the total addressable market size? Look at that and see what the value of the business can come out. आपको आता है वैल्यू करना, पहले सिखा चुका हूँ. हाँ जी. थोड़ा डाउट सर है बट तो पुराना रिकॉर्डिंग देख लो एक बार. हाँ हाँ वो तो है, बट जब तक वो एक्सपांड करता रहेगा तो ही वो सरवाइव करेगा. अगर कहीं पे भी उसको, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स तो है नहीं, ये सब शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनके पिकअप और ड्रॉप के हिसाब से बहुत है कंपनीज सर, के साथ. 2 साल के हाँ भी जी. कंटेंट मिल गया तो बहुत है, हो गया काम. हाँ जी सर. There's a lot of room to grow. He has got ग्रो. cash. He has got cash at his disposal. Now, what he does with that cash? If he wastes that cash, then there is a different story. But if he utilizes that cash for the benefit of the business, which I hope he should do, then we have something good. राइट. यस सर. ठीक है sir. I hope all questions राइट are answered. राइट सर. यस सर. यस सर. Thank you sir. Bye bye.